Assalamu alaikum and good evening to everyone who has joined us. So, just like every alternate weekend, I'm here with another session of DSG Energy, the webinar series. And the topic that we have chosen today, it's actually quite interesting from the information point of view as well as from the awareness perspective. Just like it's written here, COP27 Insights and Future Plans. Starting with that idea, what's COP27? It's actually I'm going to give you a very quick short introduction about the COP27. It's actually the Conference of Parties, which is held under United Nations Framework Convention on Climate Change. And not that long ago, from 6th of November to 20th of November, I guess, it was held in Egypt, and it was followed by the COP26 जो उसके unfulfilled plans रहे हैं as well as the plans that we have in the future. So I think it would be a very appropriate introduction from my side. So as we have an honorable guest from us with us today, one of them has himself attended the COP27 and represented Pakistan. So I'm going to not going to delay the whole process, and I'm going to welcome our guest to the session. Assalamu alaikum, everyone. How are you? Walaikum salam. So we have with us Mr. Asad Kamal, who is leading the sales division of DSG Energy all over Pakistan. We have Talha Jamil, who is an energy enthusiast himself, and we have Hamza Naeem, who is an energy analyst, and he recently attended the COP27 in Egypt and represented Pakistan. Welcome to the webinar session, Hamza. How are you? Yes, thank you so much. Thank you so much, GS Energy, for inviting. I am fine. First of all, Can I'll you hear actually us? Can you hear yeah, me? yeah, I can hear you. Yes, we can. So Okay. I'll start with congratulating you because I think it's an achievement itself to represent Pakistan in around 35,000 applicants. I guess there were 30,000, 35,000 plus participants from all over the world. So congratulations to that you represented Pakistan at such a global level. And I won't be delaying. I gave a little bit of the short introduction regarding COP27. Please do tell us something about what was COP27, what was its significance, and how was your experience overall? Thank you so much, Hifza. Yes, it was really a privilege presenting Pakistan at a very larger stage, and it was like you have told about 35,000 participants. There were more than 50,000 delegates and participants all over the world. Oh, nice. You have all you have all you have introduced the COP very well technically, but let me tell you, there are delegates from the different countries, the journalists, civil society participants, negotiators, the government officials all over. Like negotiations are being carried on. There are some lot of events being carried on. There are awareness sessions being on the COP. So from being Pakistan, there were like 50 participants designated at the different levels. I was a part of civil society over there, and I had a very enriched experience meeting there with a lot of delegates, some people from the countries, and my fellow beings were like from the 20 countries, majority from the G7 countries. So did have the negotiations part also. I did also have some presentation stuff on the climate financing. So this COP was very much different if we compare with the previous ones. Till COP27, the major agendas were climate adaptations, renewable energy transition, climate justice, and some topics like that. But Yeah, I loss and was damage studying the was significant six topics. Yeah. okay. Loss and damage was the new addition within this COP, and Pakistan played a hyperactive role in advocating about loss and damage mitigation measures. And in the end, it was successful outcome for the Pakistan being the climate funding is actually being realized. We have this question right here as well about the loss and damage funding. I think if you could explain it a Okay. little bit in detail, because I think it's the pretty new clause of the COP27 and the climate change disaster management. So if you could tell us a little bit of detail about the loss and damage funding, that would be great. Exactly. Um, there are some three levels of actually the word.
The topmost one are the developed nations. They are industrialized. They have like a transportation indexation of very high level. They are the bulk consumer of fossil fuels. Then comes the developing nations, which are striving hard with their economic indexes, keeping the betterment in their society and the development. And then comes the underdeveloped nations, which are like not so industrialized. They have a poor indexation level. So what happens, the carbon emissions are being made by the developed nations are very much higher compared by the rest of the two groups. Pakistan recently has faced a disastrous, we can say disastrous circumstances under the climate thing. Being we are less than 1% contributor in the global emitters, but we have seen $17 billion of we can say like losses by the contributions made by the developed nations. So there was no climate justice before COP27 being discussed on the tables and the negotiations. So Pakistan hyperly activated about the loss and damage because we are losing, we are being damaged by the consequences, by the contributions in climate carbon emissions by the developed nations. So on the negotiation tables, in the presentations, making the credits cards thing of all over the, this was a main principal stance of Pakistan, which is actually been achieved. So summing up, loss and damage is a mechanism where the developed nations would be contributing development funds, or we can say some compensation funds towards the developing and underdeveloped nations. So this is all about the loss and Okay, damage that's mechanism would exist. if it would be implemented, I guess that would be a very big step towards fighting the whole climate disaster. Thank you, Hamza. And before moving to the technicalities of the whole, the vulnerabilities and the clauses that COP27 had, I guess I'll start with the basic idea of the COP27. Talha, at the core of this whole idea of this COP27, COP26, जितने 27 sessions अब तक हो चुके हैं, there was a Paris Agreement behind that, the idea of Paris Agreement. Can you tell us about a little bit, just for the awareness purpose, that what was Paris Agreement and how have we reached here so far? Can you hear us, Talha? जी जी, आवाज आ रही है? बीच में आवाज ब्रेक कर गई थी, रिपीट कीजिएगा प्लीज। Just wanted to have a little bit discussion before moving to the technicalities of COP27. At the heart of COP27, I was saying that there is a Paris Agreement behind it. कि हम Paris Agreement जब से start हुआ है, there are 27 sessions that have been held on that particular idea. So I just wanted you to have a little bit discussion about the Paris Agreement कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं at the end of 2022. अच्छा, पेरिस एग्रीमेंट बेसिकली 2016 में साइन हुआ था। बेसिकली इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें सारे कंट्रीज ने एग्री किया था कि हम क्लाइमेट चेंज को फाइट करेंगे। टारगेट उन्होंने किस तरह से सेट किया कि हम प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एज जो थी तब उस वक्त जो ग्लोबल टेम्परेचर था उससे सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। अब इसको किस तरह से फाइट करने का तरीका है, इसको दो कैटेगरीज में कह लें डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्टली ये आपने सबसे पहले तो अपनी कार्बन एमिशंस को कम करना है। सेकेंडली ये आपने कार्बन एमिशंस को एब्सॉर्ब करना है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी और थ्रू रीएफोरेस्टेशन। Okay, so what updates do we have regarding Paris Agreement? Where do we stand so far globally? अच्छा, हर जितने भी आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई हैं 21, 22, 26, कोई ना कोई नए विजन्स के साथ लोगों ने डिस्कशंस की हैं, मगर कई जगह जो है इसके ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। मगर कोप 27 में जिस तरह हमजा ने बताया, इसमें काफ़ी स्ट्रेस आउट किया गया कि हमने प्रीवियसली काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर बात तो की है मगर हमने कोई प्रॉपर स्टेप नहीं लिया। तो इस दफ़ा वो लॉस एंड डैमेज का फंड जो है वो रेस किया गया, जैसा हमने एक्सप्लेन किया कि डेवलपिंग कंट्रीज सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को। डेवलप्ड कंट्रीज जो है एक फ़ंड एलोकेट करेंगे इन डेवलपिंग कंट्रीज को जो भी लॉस फेस करना पड़ा उसको कंपनसेट करने के लिए। इसके अलावा भी डिस्कशन चल रही हैं कि किस तरह डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट कर सकती हैं, आइदर टेक्निकली और फाइनेंशियली।
Yeah, right. Because I think it's not only the concept ke jahan it's not about the conservation and how to increase, decrease the emission, reduce the emission. It's how we can innovate our technologies and how we can innovate the certain, from the we have the artificial intelligence era. So how can we make the best out of it? So we are talking about the developed and underdeveloping countries. Sir Asad, I'll move to you. And what do you think are it's the Pakistan role in the net emission globally all over the world? What's the Pakistan net emission stats, and what's the general criteria? How much emissions are being done by the Pakistan itself? Okay, सबसे पहले तो I would like to congratulate Hamza for representing Pakistan at such a world level platform. और ये बहुत ही you should be proud of yourself because ये because humanity comes first. ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों ने ओवर द वर्ल्ड इस प्लैनेट अर्थ पे लाइफ के सर्वाइवल के लिए और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को ऑब्वियसली देखते हुए कुछ ऐसी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया जिसकी वजह से ऑब्वियसली लाइफ ऑन अर्थ एंड द नेचर हैज़ डिस्ट्रॉयड, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये तमाम मसाइल हमें पेश आ रहे हैं। स्पेशली पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्री who has drastically affected by this factor. अगर मैं बात करूं स्टैट्स की तो पाकिस्तान ने पिछले तकरीबन कुछ 25-30 साल से अगर हम देखें तो स्टैट्स एनडीसी स्टैट्स कहते हैं कि 140% इंक्रीज आया है पाकिस्तान की जो है वो एमिशंस में, एंड विच इज़ अगेन दे आर एंटिसिपेटिंग that by 2030 it's going to exceed by 300%, which is huge. Obviously, this is a big concern. अगर इसको प्रॉपर मेजर्स या जो एक्चुअली पॉलिसीज़ कुछ एग्जिस्ट करती हैं, एक तो उन पॉलिसीज़ को थोड़ा सा और रिवैम्प करने की ज़रूरत है और उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है सबसे पहले तो, क्योंकि जिस स्पीड से ऑब्वियसली ये पिछले 1-2 डेकेड्स में बढ़ा है और आगे उससे भी डबल होने का खदशा है विद इन अ डेकेड, तो दैट इज़ ऑब्वियसली अलार्मिंग। इसमें जो मेजर फैक्टर है ऑब्वियसली दैट इज़, अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं तो सबसे बड़ा आप कह लें कंट्रीब्यूशन हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का है और एंड फॉलोड बाय एनर्जी सेक्टर एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो फ्यूल कंबस्शन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स जिसने जो है वो कार्बन एमिशंस में ऐड किया है, जिसमें हमारी इंडस्ट्रीज़ का जो परसेंटेज है दैट इज़ अप टू 32%। देन ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली बिकॉज हमारी फ्यूल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज़ 28%, एंड देन हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोडक्शन है दैट इज़ 27%, बिकॉज 60% ऑफ जो पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स है दैट इज़ फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड, and more than 10% of electricity we are producing is from the coal. So this is what obviously Pakistan's current status and what we are anticipating in the future is. Hamza, you must have discussed this over your sessions as well in person. Where do we stand overall as a nation regarding We the are, emission point of view? yes, exactly. As per मतलब कैन आई स्विच इन आल्सो इन उर्दू लाइक Yeah, yeah, it's fine. हमारे बिल्कुल। ऑडियंस हमारे पास फॉरन तो नहीं होंगे, ओके। जी जी बिल्कुल। वहाँ पे ज्यादातर एडवोकेसी पाकिस्तान की बाय माय साइड टू क्लाइमेट चेंज, जितने भी हमारे यहाँ पे नेगोशिएटर्स थे, दे जस्ट टू चैंट अबाउट कि हम लोग लेस देन 1% कंट्रीब्यूटर है अगर आप पूरे वर्ल्ड की कार्बन एमिशंस को निकाल लें। वी आर लेस देन 1। हमारे जो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है इसकी वजह से वी आर एट द हाईएस्ट वन। देन ऑल्सो हमारा जो पाकिस्तान का मैप, इफ वी फॉलो ऐप, कुछ वर्टिकल मैप है, व्हाट गोज इन द नॉर्दर्न एरियाज कम्स अप एट द साउथ, बिकॉज हमारी हीट वेव्स ग्लेशियर्स को इम्पैक्ट करते हैं, देन अनयूजुअल मूनसून्स, इसकी वजह से हमारे पास इतना इरिगेशन सिस्टम स्ट्रॉन्गर नहीं है। हमने इन्वेस्ट नहीं किया, हम लोगों ने उसको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया लाइक जस्ट लाइक हम उसको एक फ्लड से हम बच सकते हो। तो हमने बताया कि वहां पे ये ज्यादा नेगोशिएशन चलती रही है कि बीइंग द लीस्ट कंट्रीब्यूटर्स, बट इम्पैक्ट जो हमारा जो वनरेबल है वो हम हाईएस्ट हो चुके हुए हैं इस ईयर पे आगे। सो दैट इज व्हाई हम इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम अकेले नहीं ले सकते। Polluter must pay was the slogan by the Africans adopted by us.
वहां पे अफ्रीकन का बड़ा मजे का स्टाइल होता है, दे जस्ट चैंट अ ड्रम और प्लूटस मस्ट पे, तो वो उस चीज को लेके चल रहे होते हैं बिकॉज वो निग्लेक्टेड है। पाकिस्तान की कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक वॉइस है दुनिया में अंदर। सो इट वाज आल्सो अडॉप्टेड विद अस। सेकंड ये भी था कि पाकिस्तान के जो मैसेजेस थे जगह जगह पे, दैट वाज वेरी मच लाइक आई कैचिंग। इट वाज लाइक व्हाट गोज इन पाकिस्तान, व्हाट स्टे इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में हो चुका हुआ पाकिस्तान में रहेगा नहीं। Everyone there was asking me or other delegates, okay, you are from Pakistan, but what does that mean? वो क्या लिखा हुआ है, वो क्या एक मैसेज है, is that a warning? And we used to say yes, this is actually a warning। जो पाकिस्तान में हो चुका हुआ है, if हमने इसको ग्लोबल एक्शन नहीं बनाया, हमारे लिए पे खतरा हो जाएगा, ये फिर Everything पाकिस्तान that's पे going around, it's escalate either करेगा। warning or a threat for us एग्जैक्टली right now. Yeah. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो ग्लोबल एक्शन के ऊपर बहुत बात हुई कि ग्लोबल एक्शन के अंदर पहला एजेंडा था लॉस एंड डैमेज फंड, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, क्लाइमेट जस्टिस। उसके बाद जस्ट लाइक एवरी कॉप द कंट्रीज प्लेज्ड आल्सो कि हम इतनी इतनी एमिशंस कम करेंगे, इतनी एमिशंस कम करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा एजेंडा, सबसे ज्यादा जो वॉइसेस थी वो ग्लोबल उस पे क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर ही थी वहां पे। We do have this comment and rather question as well, that we are focusing on seminars and we are talking about meeting and the parties are like sitting together and talking about all over the things. What steps are not being taken yet that we have to initiate from our sides? What do you think? How can we overcome this damage? It's from me? जी जी बिल्कुल. You attended the COP27. Okay, okay, It's okay, going to be especially from you the questions. okay. Exactly. There are a lot of seminars, there are a lot of presentations and meetings, जो कि हमारे जो टैक्स पेयर्स है, वो भी अगर हम पाकिस्तान के अंदर की हमारे टैक्स पेयर्स की अमाउंट के ऊपर ही देयर आर लॉट ऑफ मीटिंग्स बीइंग डन, और बहुत ज्यादा सेमिनार्स ही हो रहे होते हैं। आई गेस आई थिंक कि यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा एक इंटीग्रिटी की जरूरत है, इंस्टीट्यूशंस की आपस में एक इंटीग्रेट हो जाएं कि वी जस्ट हैव टू नाउ सिट डाउन, मीट, हमें अब एक एक्शनेबल प्लान के ऊपर हमने डिसाइड करके ही अब उठना है, एंड जस्ट वी आर गोइंग टू द फील्ड्स और उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर जाए। सो ये एक इंटीग्रिटी की जरूरत है, एक हमें कंसेंट की जरूरत है यहाँ पे। सो मीटिंग्स, सेमिनार्स, ये सब कुछ तो होते रहेंगे, तो दे आर एक्चुअली गुड फॉर द अवेयरनेस, बट एक एक्शनेबल चीज के ऊपर बात आती है तो इज अ रोड मैप दैट इज बीइंग अनफॉर्चुनेटली। But I think, in my own personal opinion, whenever you have to go to some practical implications, या आपको किसी भी action को लेने की ज़रूरत है, उससे पहले you have to chant and you have to, when you're using the slogans, I think it takes one generation to make it normalize in our environment. हमने किसी भी चीज़ को normalize करना है, तो we have to say it over and over again. And all these seminars and all these sitting of the parties and discussions and continuous, podcast and everything, the webinars and everything, I think they are somehow participating in making it normal कि हमसे हमारी जनरेशन भी और हमसे आने वाली जो जनरेशन होगी, इट विल टेक इट एज अ प्रैक्टिकल थ्रेट कि उनके लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ इस तरह के आ जाएंगे. Talha, I'll move it over to you. We have been talking about, if you can hear me, I hope you can hear me. जी आवाज आ रही है। Okay. So Hamza and Sir Asad were discussing that there are developed and underdeveloped countries. So participation and the consequences that they are facing, the ratio is a little unbalanced. That's why the loss and damage fund is starting. It's initiating. When we specifically talk about Pakistan, where do we stand in the vulnerability point? हमारी जो पाकिस्तान की vulnerability है towards all the global warming and the climate change, where do we stand in that? How much vulnerable are we? अच्छा, इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि पाकिस्तान के जो ग्लोबल एमिशंस हैं, जैसे कि पहले भी डिस्कस हुए यहाँ पे, इट इज़ लेस देन 1% एज कम्पेयर टू द होल एमिशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। मगर पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज जो कि ग्लोबल Exactly. क्लाइमेटिक चेंजेस से अफेक्टेड है। उसकी रीजंस काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जैसा हमजा ने पहले भी डिस्कस किया कि नॉर्दर्न एरिया से लेके साउदर्न एरियाज तक हमारा सारा एरिया अफेक्ट होता। रेनफॉल एक्सेसिव हो जाती है नॉर्दर्न एरियाज में और वो कैरी आउट करती है ऊपर से लेके नीचे तक। उसमें कुछ हमारी अपनी भी गलतियां हैं। हम री एफॉरेस्टेशन पे काफ़ी फोकस कर तो रहे हैं, मगर हम डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे। उसका नुकसान क्या है? आपने सुना होगा फ्लैश फ्लड्स पहले कभी नहीं आते थे, आजकल आप काफ़ी सुन रहे हैं कि ये है।
उसकी वजह ही डिफॉरेस्टेशन है। आपके जंगल वगैरह हो वहाँ पे, मतलब प्लांट्स ट्रीज वगैरह हो, तो वो फ्लड्स का इम्पैक्ट काफ़ी कम कर देते हैं। ना हो तो फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो तबाही आपने इस साल पिछले साल देखी थी वो आपको देखने को मिलती है। उसके थोड़े से फिगर्स शेयर करूं कि लास्ट ईयर जो फ्लड आया था उसमें आपके ऑलमोस्ट 33 मिलियन अफेक्टीज थे और 17 बिलियन डॉलर्स का आपको इकोनॉमिक लॉस हुआ था। तो पिछले साल का फ्लड देखें और उसके अगेंस्ट हमने कौन से मेजरमेंट्स लिए हैं उसको अवॉइड करने के लिए, आपको नजर आएगा कोई खास नहीं है। तो ये खुदा न खास्ता इसी तरह के डिजास्टर आगे भी आ सकता है अगर हम अभी से स्टेप्स वगैरह नहीं लेंगे इसको कैटर करने के लिए। So I guess whether or not we are participating in the global emissions or not, at the end of the day, we are going to be affected, and we are going to be affected at a very bigger scale. So as we are working, sir, as we are working in the renewable sector, तो renewable is a very major portion जो कि climate change fight में consider होता है, a very major part of the solution. What is the role of renewable industry? Because जब हम renewable industry की बात करते हैं तो we have a lot of options here. We have the solar, we have the wind, we have biomass, we have a lot of other options as well. Where what's the basic role of renewable industry? What's the basic of renewable energy in fighting the whole existential crisis? इस पे देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वी हैव टू बी प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। जिस तरह से हमजा ने और तला ने बताया कि ऑब्वियसली पाकिस्तान सफर्स फ्रॉम मैनी एक्सट्रीम कंडीशन इवेंट्स एवरी ईयर ऑलमोस्ट, एंड देन जो उसमें लॉसेस हैं दैट कम्स अप टू बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो अगर हम वही बिलियन ऑफ डॉलर्स जो हम डैमेज को रिकवर करने के लिए लगाते हैं, अगर उसका मेरे ख्याल से हाफ से भी कम हम अपनी कुछ इस तरह के big renewable energy is one of the very key element, उनमें अगर हम इन्वेस्ट करें तो आई थिंक कि हम इन एक्सट्रीम इवेंट से और इस किस्म के डिज़ास्टर से बच सकते हैं। और अगेन हमारी जो स्टैट्स हैं वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी जो फ्यूल कंबस्शन और जो हमारी एनर्जी है वो टोटली ऑब्वियसली डिपेंड कर रही है उस किस्म के प्रोसेसेस पे जो कि ऑब्वियसली हमारे क्लाइमेट को जो है वो डे बाय डे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो अगर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्वियसली जिसमें सोलर एनर्जी है, देन विंड है, थर्मल है, और इसी तरह इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो तो ऑलरेडी इसको काफ़ी जो है वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं अपने और, लेकिन पाकिस्तान इज़ फार बिहाइंड दिस। पॉलिसीज़ ज़रूर मौजूद हैं लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अगर हम अभी भी अपने जितना पोटेंशियल यहाँ पे रिन्यूएबल का मौजूद है, लेट्स सपोज मैं अगर सोलर एनर्जी की बात करता हूँ, तो इवन 1% ऑफ जो पाकिस्तान की लैंड है उसको अगर हम यूज़ करें फॉर द सोलर एनर्जी प्रोडक्शन, तो पाकिस्तान की ओवरऑल एनर्जी की जो लॉसेस है वो हम रिकवर कर सकते हैं। सो आई वुड अप्रिशिएट कि इसमें पॉलिसी ज़रूर बनी है, जिस तरह के ऑब्वियसली by 2025 the government has decided that the Ministry of Energy that we will be switching to like 20% of our energy to renewable, and by 2030 the target is for the 30%. But again, the graph with which we are trying to reach this goal is not is very slow. That needs to be a bit faster. हमें इसके अंदर मज़ीद एक तो कह लें कि सब्सिडीज़ और इसमें ऐसी अप्रिशिएटिव किस्म के जो हैं वो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि हमारी इंडस्ट्री स्पेशली जो है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इंडस्ट्री इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर जो कि इसमें है। तो अगर जितना हम इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे और इस किस्म की पॉलिसीज़ लाएंगे कि वो अपने जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज को जो है वो यूज़ करे, और इसी तरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैं समझता हूँ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि एज पर पॉलिसी ऑब्वियसली उस पर भी 2030 तक वी आर प्लानिंग टू स्विच 30% ऑफ आवर व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एंड बाय 2040 it's gonna be 90%। बट अगेन उसको इम्प्लीमेंट करना एक मेन चीज़ है। तो ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री अगेन अगर इनको हम रिन्यूएबल पे शिफ्ट करें तो ऑब्वियसली ये जो मसाइल हमें फेस करने पड़ रहे हैं
ये जो है वो काफ़ी हद तक ओवरकम हो सकते हैं। Yeah, this question is right here, considering the current economical situation as well. Ehsan is asking that when we are talking about renewable energy, especially the solar energy, why are we not manufacturing the solar panels locally? And what are the main hurdles? Is it because of only investment issues? So, Rasad, I guess you can answer it better. देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट इशू इज़ नॉट मेन इशू ऑब्वियसली। जब भी किसी ये वो इंडस्ट्री है इस वक्त दुनिया में जिस पे जो इस वक्त अपने पीक पे है, और अगेन ऐसी इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट्स के इश्यूज नहीं होते। आई थिंक पर्टिकुलरली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो अगेन सबसे पहले तो जो एक क्वालिटी कंट्रोल है दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट, वो एक तो पाकिस्तान में अचीव करना इज़ अ चैलेंज, बिकॉज रॉ मटेरियल जो है वो इवेंचुअली हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो अभी तक चूँकि इस पे सोलर की जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे ड्यूटी नहीं है, इम्पोर्ट पे ड्यूटी नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप इनको इम्पोर्ट करके रॉ मटेरियल यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, सो समटाइम्स यू एंड अप मैन्युफैक्चरिंग इन अ हायर कॉस्ट इवन देन चाइना। सो हाँ, अगर इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी हो तो विच इज़ लाइक अगेन इसकी प्राइस 20-25% अप टू 30% इंक्रीज कर देगा अगर इम्पोर्ट ड्यूटी इस पे गवर्नमेंट लगा देती है। सो देन इट विल मेक सेंस कि अगर आप उसको पाकिस्तान में जो है मैन्युफैक्चर करते हैं तो यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट अप टू 25-30%। तो अगर आप एक लार्जर वॉल्यूम में देखें तो 25-30% इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। तो चूँकि ये एक ड्यूटी फ्री जो है वो प्रोडक्ट है और इवेंचुअली रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इसलिए अभी तक उसकी कमर्शियल सेंस जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बनती कि इसको लोकली मैन्युफैक्चर किया जाए। That's a pretty precise answer. Looking at the bigger picture, Hamza, um, what did you see? I think there were like 15 to 16 days of the event. Yes, it What do was. you think, what do you think was the conclusion or the fruits that we will be getting in our future from the COP27 itself? Okay. Even COP27 was extended by 2 days only. वो जहाँ पे उसका 14 days का एजेंडा था वहां से वो 2 दिन मजीद ओवरनाइट ओवर द वीकेंड भी वो नेगोशिएशंस चलती रही हैं। सो बाय द Sunday that was I guess 15 or 16 November when the official declaration was made by the UNFCCC, and it was pretty much useful for the Pakistan that कि हमने लॉस एंड डैमेज का जो एक मैकेनिज्म फंडिंग अकाउंट है वी हैव क्रिएटेड इट, हमने वो बना लिया है। सो अब उसके ऊपर भी थोड़े से रिपरकशंस हैं पाकिस्तान के लिए भी, बिकॉज एक जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस है अंडर जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दे डू हैव टू हैव अ कॉन्फिडेंस अपॉन के जिस कंट्री को हम फंड कर रहे हैं, सो द अमाउंट शुड बी गोइंग एट द ग्रास रूट लेवल ऑफ द सोसाइटी। तो उसके लिए भी पाकिस्तान प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को to avail the loss and damage fund, and secondly जो हमारे पास जहाँ पे लोकल लेवल के ऊपर भी जो रिकवरी की एफर्ट्स चल रही हैं वो उसको भी तेज किया जा रहा है इस टाइम पे। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की तरफ से भी उसके ऊपर काफी इंप्लीमेंटेशन है, एनडीएमए भी वहाँ पे काफी अपना अच्छा रोल प्ले कर रही है। तो जितना भी डिजास्टर हो चुका हुआ है तो उसको बड़ा स्पीडी किया जा रहा है जस्ट बिकॉज कि यूएनएफसीसी की तरफ से ये जो क्लाइमेट फंड है इसकी जो फ्रूट्स हैं वो हमने उसको अवेल करना है। ऑल्सो क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक इंडेक्सेशन है वो थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं, तो हम वी हैव टू रिलाई अपॉन द फॉरेन डेप्ट। तो उस डेप्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ रिलैक्सेशंस की बातें अभी की जा रही हैं एट द हायर लेवल, एट द वर्ल्ड बैंक लेवल एंड आईएमएफ। सो अब आहिस्ता आहिस्ता COP28 तक वी कैन देन फोर्सी हमको इवेंचुअली कितना फायदा कितना नुकसान COP27 का हुआ है, बिकॉज नेगोशिएशंस आर वेरी, आप कह सकते हैं स्लो प्रोसेस होता है, बड़ा ग्रेजुअली एक नेगोशिएशंस होती हैं, उसकी फिर मीटिंग मिनट्स निकलते हैं, देन दे गो इनटू द सेकंड मीटिंग, वहां से फिर वो चीजें और राइप अप होती हैं। तो अभी एट वंस अगर हम कहते हैं कि द मोस्ट फेवरेबल फ्रूट फॉर अस इज के फंड बन चुके हुए हैं, लॉस एंड डैमेज के ऊपर लोगों की अवेयरनेस बन चुकी हुई है, कंट्रीज आर लाइक उन्होंने अपनी इंटेंशन शो कर दी हुई है कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट द लॉस एंड डैमेज। सो Right. इट इज एक्चुअली, ये हमारी अचीवमेंट नहीं है एक्चुअली, पीपल आर It's a चैंटिंग एंड start. स्लो। इट्स अचीवमेंट कह भी नहीं सकते, बिकॉज हमने डिजास्टर के बाद कोई चीज विन कर ली है, दिस इज नॉट अचीवमेंट।
लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने रिकवरी के ऊपर कुछ जो काम किया पाकिस्तान ने, तो हमारा तो फायदा होगा, बट वो अंडर डेवलप्ड जो अफ्रीकन नेशंस बहुत ज्यादा वनरेबल भी हैं, अफेक्टेड भी हैं, लेकिन दे डिडंट हैव द वॉइस। उनके लिए भी कुछ ना कुछ इस चीज के ऊपर बातें की जा रही हैं कि अब उनको भी सपोर्ट किया जाएगा। सेकेंडली, ये भी शायद ग्रुप बन सकता हो जस्ट लाइक G20 या G7, जो हमारे जो जाइंट्स हैं, तो इस तरह से शायद एक कुछ वनरेबल कंट्रीज भी इकट्ठे होकर क्लाइमेट डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट ले आए। दिस इज प्रेटी न्यू। हम फाइनेंस डिप्लोमेसी या कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक क्लाइमेट डिप्लोमेसी का भी टॉपिक आ सकता है। Thank you, Hamza. Talha, from a person who has been taking the updates from the social media and reading the articles everywhere, what do you think? Where do we stand after the COP27? What are the fruitful conclusion or results that we'll be getting? लॉस एंड डैमेज वाली जो पॉलिसी जिसके ऊपर सारी कंट्रीज ने एग्री किया है, ये एक मेजर आउटकम है COP27 की, जिससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। मगर जैसा इसमें जितनी मेरी अभी तक रिसर्च है, इसके ऊपर सारे कंट्रीज ने एग्री तो कर लिया मगर अभी तक मटीरियलाइज नहीं किया। देन अगेन डिपेंड करता है कि आप इस फंडिंग को किस तरह से यूज करते हो। आपका जो डैमेजेस हुए हैं सिर्फ उसको आप रिपेयर और लॉसेस कवर करने में करते हो, या फिर आप कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हो जो कि फ्यूचर में लॉन्गर रन में आपको फायदा देंगे। इस चीज पे सारा डिपेंड करता है कि किस तरह से पाकिस्तान को फायदा होने वाला है इस फंडिंग से। Right. Sir, one last message from your side. I think this is a very great initiative, or the country like us obviously should be the beneficiaries. जैसा कि हमजा ने ये बताया कि ऑब्वियसली डिजास्टर के बाद उसको डैमेज को रिकवर करना कोई अगेन इज नॉट एन अचीवमेंट, बट ऑब्वियसली टू सम एक्सटेंट ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। हम इसको कम से कम करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगेन अगर एक ह्यूमैनिटी कॉज के लिए सारी दुनिया यूँ इकट्ठी हो, और तो ऑब्वियसली एक सपोर्ट रहती है, और फ्यूचर में जो है, और इससे पहले भी जो ऑब्वियसली वाक़यात हो चुके हैं, उनको हम बेहतर तरीके से अगेन डैमेज रिकवर करना भी ऑब्वियसली रिएक्टिव होने में भी यू नीड टू बी गुड, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि ठीक है आप प्रोएक्टिव तो होना ही चाहिए, लेकिन व्हेन जब कोई चीज़ हो जाती है कोई डैमेज, तो ऑब्वियसली हाउ टू रिकवर आउट ऑफ इट, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है। So I think this will obviously add a lot to the damage recovery of Pakistan and other countries in the world. Thank you. Hamza, one last message from your side as well. We have this question that how is the climate change affecting the biodiversity from Muzammil? This question, and also I would like that your final remarks regarding your overtake that you have taken from the COP27 regarding the advocacy that was presented from Pakistan specifically. Do let us Okay. know as your as the concluding note of this session. Okay. First of all, the question, the biological scientist would answer it very well, but biodiversity is a very dynamic point of view of dynamic society, और biodiversity के ऊपर ही हम mammals या हम humans भी depend कर रहे होते हैं। The created the atmosphere, environment है, वो काफी interconnected है। When one of the aspect is get disturbed, तो obviously वो दूसरा उससे भी बड़ी quickly में जो डिस्टर्ब हो रहा होता है। जस्ट लाइक हम क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स है उसकी बात करें, हीट वेव्स आपके प्लांट्स, आपके जो एक बायोलॉजिकल जो भी स्पीशी होता है, तो उसको बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रहे होते हैं। फ्लड्स, लास्ट 2 weeks ago I managed to go into Sindh, और वहां पे भी कुछ मेरा जाना हुआ। सो that was drastic picture over there. Crops were vanished away, food scarcity के हमें बहुत ज्यादा issues आएंगे वहां पे ऊपर। So क्या है कि वो interconnected है सब कुछ, environment is interconnected। Human if disturbs the environment, वही environment वापस जाके human को disturb करेगा। It's a vicious cycle. It's a vicious cycle, exactly। ये एक cyclic एक process के अंदर चला करता है। So क्लाइमेट चेंज का ऑब्वियसली बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट है, वही फिर हमारा एनवायरनमेंट भी इफेक्ट किया करता है। And the last message from my side, how was the advocacy made over there? And it was a very dynamic experience seeing people running, going all over the
pavilions, other countries के जो वहाँ के countries के I, pavilions थे I वहाँ I'm पे थे. sorry. I heard there was a specific children pavilion there as well. For the Pakistan, yeah, No, exactly. all over the world. Like it's like Okay, okay, yeah, generically. Yeah, yeah. exactly. Youngsters को जो teenagers like the age of 11, 13, 18 years, तो उनके लिए बकायदा प्रोग्राम्स हैं. And there was a very healthy participation from Pakistan also. हमारे भी कुछ 20 स्टूडेंट्स थे यहाँ से, तो वो वहाँ गए हैं, दे मिंगल इन और वहाँ पे लोगों से मिले हैं, बातचीत हुई है. तो ओवरऑल तौर पे पाकिस्तान की एडवोकेसी वाज वेरी वेरी मच हाइपर एक्टिव दैट टाइम. That credit goes to Ministry of Climate Change. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई वेंट देयर, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और वहाँ पे पूरे कंट्री के काफ़ी कंट्री से जर्नलिस्ट थे, बड़े 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 मीडिया चैनल की तरफ से लोग आ रहे थे. एंड देन ही आल्सो स्पोक टू द इवेंट जिसके अंदर काफ़ी डेलीगेट्स थे. एंड I have also seen Senator Sherry Rahman. It was just like asking us, हमें वो पूछ रही थी, भाई आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं, आप जाएं, आप पेविलियन टू पेविलियन जाएं, बात करें, वहां से लोगों को लेकर आए, आपका कौन सा इवेंट है, आपका क्या है. एंड शी वाज जस्ट रनिंग अराउंड, शी वाज जस्ट लाइक एक पेविलियन से दूसरे पेविलियन खुद जाके लोगों को पकड़ के ला रही है पाकिस्तान पेविलियन के अंदर कि वी हैव अ इवेंट, वी हैव टू से समथिंग, वी लिसन आवर वॉइस, सब कुछ है इस तरह से. वो काफी अच्छे तरीके से चल रहा था. देयर वर सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज जो एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, फिर फौरन दूसरी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तीसरी मीटिंग. मैं अगर अपनी बात करूं तो इन 2 days I attended or presented myself like in 12 meetings. तो वो एक और बाय और अगली मीटिंग आ रही है, फिर देन अगली मीटिंग आ रही है, तो द मैसेज वाज वेरी सेम. एक ही बात है, वो हमने रट ली थी, पाकिस्तान एमिशंस एंड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, तो उसी को बार बार रिपीट करना लोगों के सामने. और हमारा जो वही बड़ा, जैसे पहले बताया कि जो स्लोगन बड़ा आई कैचिंग था, उसको डिफेंड करना. तो बड़े मैसेजेस दिए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, बहुत ज़्यादा वॉइसेस क्रिएट की गई हैं वहाँ पे. एंड जो लॉस एंड डैमेज का जो फंड है, उसको अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को क्रेडिट किया जा सकता है कि पाकिस्तान की ही इसी हाइपर एक्टिव एडवोकेसी की वजह से कंट्रीज मेड दैट कि हम इसको परस्यू करेंगे. Thank you so much, Hamza. One last remarks from your side, Talha. Can you please repeat? आवाज नहीं है मुझे सही से. Just a concluding remark. कंक्लूडिंग रिमार्क यही है, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट में भी है, ओवरऑल हमें एक्ट करना चाहिए. किस तरह से करना है, अपनी कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना है, और कार्बन एमिशन जो कुछ होती हैं जिनको आप नहीं ख़त्म कर पाते, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांटेशंस वगैरह करनी है, या फिर अपनी एनर्जी प्रोडक्शन जो है रिन्यूएबल्स की तरफ लेके जानी होगी. Right. There was this one sentence that I read regarding somewhere in the COP27 whole scenario, that there is a red line that we must not cross, is to take that 1.5-degree limit for our planet. I think if we keep just this idea in mind, I think this summarizes up all the concept of all the parties that they are having discussions over and over again over this crisis and the whole climate change fiasco and disaster. So if we keep that idea in mind, that from the individual level to the international level, we have to take care that we must not cross at the end of this century or at the end of this whole decade, we must not cross this limit. And I guess it would be a pretty successful, the whole fight would be pretty successful if we take care of that. Thank you so very much for all the guests that here that were present here. Very insightful and informative se discussion thi. I hope that we carry on having this discussion and carry on spreading the awareness regarding this current global threat that we are facing right now. For all the audience that are currently present, I would welcome everyone. If you have any suggestion for us, जिसके बारे में हम बात कर सकें, जिसके बारे में हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें, फैला सकें, तो that would be a great insight from your side. Thank you so much again, the three of you, for joining in and having such a great discussion all over the whole session. And I'll be back with another topic with other forms of guests to talk about other issues. Till then, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you. Hafiz.